हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं होली के उपलक्ष्य पर हमारा स्पेशल कवरेज ऑन इक्विटी मार्केट्स। ऑन दिस वाइब्रेंट होली, लेट्स पेंट द कैनवस ऑफ स्टॉक मार्केट विद स्ट्रोक्स एंड कलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय। और हमें इस फेस्टिव सीजन में ये भी याद रखना है कि पेशेंस और स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप काम करते हैं इक्विटी मार्केट्स में, शेयर बाजार में, तो आप अपने लिए अवश्य ही लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो वेल्थ क्रिएशन में पेशेंस बहुत जरूरी है और एक स्ट्रेटेजी के साथ निवेश बहुत जरूरी है। और आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर समीर दलाल, प्रेसिडेंट नटवरलाल एंड सन्स स्टॉक ब्रोकर्स। वेरी गुड आफ्टरनून समीर जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। So thank you very much. I'm very happy to be here and give you whatever information I can. It's always a pleasure to host you, sir, and on this special occasion of colors, festival of colors, हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे निवेशक जो हमें देख रहे हैं या हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन करें जो उनको अगले 1 साल से ज्यादा अवधि में निवेशित रहे, तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे। तो टू स्टार्ट विद, जिस सर्कमस्टेंसेस में हम इस समय हैं, वी आर स्टिल आर हैविंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्फ्लेशन कम तो हुआ है लेकिन गया नहीं है, बिल्कुल एलिवेटेड लेवल्स पे है। जापान ने अपनी 17 साल के बाद रणनीति जो है वो बदलाव किया है। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से उलट वो अब 10 बेसिस पॉइंट का हाइक हम फिलहाल जो रिसेंट टाइम्स में देख चुके हैं। फेड से कुछ सुनने की उम्मीद तो नहीं है। कहते हैं कि नेक्स्ट हाफ में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती की संभावनाएं बने। तो ऐसे में निवेशक जो है वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो जो है इस सर्कमस्टेंसेस के बीच में बनाया जाए। तो ऐसे में आपकी एलोकेशंस क्या रहेगी पोर्टफोलियो में? सो व्हाट इज द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो दैट यू विल एलोकेट टू इक्विटीज, टू डेट, टू अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स? Gee, so you very rightfully said कि maybe interest rate reduction first quarter में, I mean first half में नहीं होंगे and the US will probably only do it in the second half. Now आपने जो question पूछा है is very pertinent in when you जब हम interest rate की बात करें, क्योंकि you're locking yourself in at a very high, at much higher interest rates then what you will probably see कि आप 1 year down the road interest rate यहाँ से 50 basis points या 100 basis points lower हो सकते हैं. So जी जो allocation आप debt में करोगे will also generate very good returns if you take long term bonds. So to start off, first of all I will say कि it depend जो debt और equity के allocation होने चाहिए, it is very dependent on your age. If you are in the age bracket between 20 to 40, I think जो आपका debt allocation है should not be more than 15 to 20%, because ओके you have the ability to take some more risk because your income, your earnings are there also at this point of time, and that is something which is going to give you much lower returns over a longer term compared to equity. But आपका question था, to be honest, within 1 year. So in 1 year maybe that will give a return of, अगर आप 1 year 5 year GSEC लेते हो, so you can earn 7% on that. Plus, if interest rates fall by 50 basis points on the remaining 4 years, you'll earn an additional 50 basis points. So you will get about anywhere between 8.2% return on that. So it's all dependent on age. Age may up to the age of 40, 20%, maybe up to the age of 60, you can go up to 40, and above 60, I think you can probably be higher, 60, 70, 80% there. फिर जो बाकी का है वो equity allocation में अगर हम करेंगे, तो I would say always say कि 60% needs to be in large cap. You can always आप थोड़ा वो बढ़ा भी सकते हैं, but 60% to be safe on the safe side should be in large cap. I would do another 25% in mid cap and 15% 15% small cap. That would be the allocation method for the equity component. समीर जी, गोल्ड को लेके बड़ी हलचल है और ये माना जा रहा है सेफ हेवन है। इन्फ्लेशन अगर एलिवेटेड लेवल्स पे रहती है तो खरीदारी करना बनता है। सो आर यू सीइंग और आर यू लुकिंग एट गोल्ड एज एन गुड इन्वेस्टमेंट्स फॉर से नेक्स्ट 1 to 2 years? So gold, I'm not as positive क्योंकि what you rightfully said is when interest rates are high, maybe gold could be a store of value or whatever, but we are in a period where interest rates will start going down. In that kind of situation, there need not be that much of a run up in gold. Also, I feel Okay. gold में थोड़ा सा run up हुआ है. I'm not saying it's insignificant, but we've already seen some amount of run up, and I don't have that much of a strong call on gold, so I do not take much of a call on gold. But for those gold जो है, most families में उनकी wives के पास रहते हैं in jewelry form. So you have your investment in gold. It's not necessary कि you must invest in gold. But yes, I will say this, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है,
So government has given this beautiful opportunity to invest in sovereign gold bonds, जहाँ पे आपको interest income मिलता है. So if nothing else, जी. at least you are earning something in the form of income rather than you spending money in buying ETFs or buying physical gold or storage cost or वो सब hassle के बदले, if you want to invest, Right. sovereign gold bonds are a great way of investing in gold. Rightly said. तो शुरुआत करते हैं, हम इक्विटी के पे फोकस करते हैं वापस. लार्ज कैप्स में क्या खरीदना है अगर किसी को 1 साल से ज्यादा का व्यू लेके चलना है? होली से होली की तो बात कर रहे हैं हम, लेकिन आई थिंक अगर किसी को अच्छा रिटर्न कमाना है तो 2 से 3 साल देखना नहीं है पोर्टफोलियो को, चर्न करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो लार्ज कैप्स में इस समय आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? जी, आपने वेरी राइटफुली सेड कि इट शुड बी लॉन्गर देन 1 year. दो 1 year में भी रिटर्न छूट सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी काफी रन अप हो चुके हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट स्लाइटली टेम्पर्ड रिटर्न्स. देयर आर इंडिविजुअल पॉकेट्स जहां करेक्शन आए, व्हिच आई विल पॉइंट आउट, व्हिच आर एक्चुअली माय पिक्स. बट यस, 2 years इज मिनिमम आई वुड से इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए टू सी अ गुड रिटर्न ऑफ वेल ओवर 15% केगर. तो जो दो बैंकिंग स्टॉक्स मैं रेकमेंड करूंगा लार्ज कैप में, द फर्स्ट इज HDFC बैंक. ये स्टॉक में इनफैक्ट लास्ट ईयर से काफी करेक्शन आया हुआ है क्योंकि पोस्ट द मर्जर जो डिपॉजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं हो रहे, एंड बिकॉज ऑफ विच एवरीवन इज वरीड के द बेनिफिट जो मर्जर का आने वाला था व्हिच विल बी द कॉस्ट सेविंग, इट माइट बी पुश्ड बैक बाय 1 or 2 years because they need to collect these deposits not only to grow their loan book, also to start cutting their costs. तो बेस्ड ऑन दैट एचडीएफसी बैंक इज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स इन द लार्ज कैप. दूसरा जो बैंकिंग स्पेस में जहां पे हम पॉजिटिव है, वी हैव कोटक महिंद्रा बैंक जहां हम पॉजिटिव है, एंड वी बिलीव कि दैट इज वन ऑफ द स्टॉक्स दैट विल हैज आल्सो अंडरपरफॉर्मड इफ यू गो टू लुक ओवर द लास्ट 2 to 3 years. तो वहां पे वी हैव अ पॉजिटिव व्यू. वी आर रिकमेंडिंग अ बाय ऑन कोटक महिंद्रा बैंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द बैंकिंग. अभी इफ यू स्टेप अवे फ्रॉम द बैंकिंग एंड लुक एट अदर सेक्टर्स इन द लार्ज कैप स्पेस, एक स्टॉक जिसमें एक्चुअली काफी रैली हो चुकी है बट वी स्टिल फील द वैल्यूएशंस आर रिलेटिवली अट्रैक्टिव एंड हैज गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इज आईटीसी. ITC in the cigarette business they continue to be the market leader and continue to do well. But जो उनके growth opportunities है, which is the FMCG and the divestment of its hotel business into a separate subsidiary or listing, जिसका value आ सकता है. Today we know that the tourism industry is growing at a very strong pace. Demand for tourism India में बहुत बढ़ रहा है, और because of which the hotel business will actually trade at a good premium and their value unlocking will lead to some amount of run up for ITC stock. Plus FMCG business is scaling up nicely. उनके ऑपरेटिंग लेवरेजेस चालू हो गए बेनिफिट करने के, एंड जो देखेंगे कि ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे बढ़ते जाएंगे उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएंगे, और वहां पे एक री रेटिंग पॉसिबिलिटी है. सो आईटीसी इन दी एफएमसीजी. और जो एक फोर्थ स्टॉक में लार्ज कैप में देना चाहूंगा, एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो. स्टॉक काफी भाग चुका है, वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट, बट इंडिया में we are at a phase where government is focusing a lot on infrastructure. Not only government but अभी private sector का भी investment capex आना शुरू हो गया है. Plus we are spending a lot on defense. L&T focuses on all three of those aspects. They are the largest player when it comes to government projects, जो large road projects, highways, bridges, I mean name it, they are part of it. Right. Look in the Apex space, they do a lot of these plant setups. They do real estate development for other people. So those space में भी अच्छा demand आ सकता है. And lastly, in the defense also, they have a lot of products in the varying spaces, with all the way from submarine making to missiles to rockets to all of it. So I feel कि Larsen and Toubro, no doubt valuation expensive है, so returns शायद थोड़े tapered रहेंगे, but any fall in L&T would be a buy recommendation. Even at these levels we are saying good, but correction even more attractive. चलिए अब बात करते हैं मिड कैप स्पेस की. मिड कैप से अभी तो सब घबरा रहे हैं बिकॉज द काइंड ऑफ करेक्शन दैट वी सॉ इन मिड कैप्स, तो उसके चलते हुए थोड़ा बहुत पैनिक रिटेल के बीच में है. बट अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी की बात करें, वेयर वी आर टारगेटिंग टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2050, $7 trillion इकोनॉमी बाय 2030, व्हिच इज नॉट फार ऑफ. अगर ऐसा है तो मिड कैप्स में परफॉर्मेंस जरूर आना चाहिए.
तो ऐसे में अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स लेने हो तो कौन से लेने चाहिए? सो मिड कैप स्पेस में ऑटो इज समथिंग दैट वी हम लोग को पसंद है फॉर द सिंपल हम्म, रीजन कि ऑटो इज अ वेरी डोमेस्टिक सेंटर्ड बिजनेस. The growth in domestic market will ensure कि the auto industry continues its growth momentum. Instead जी, of playing a direct auto company, also वो खेल सकते हैं. We are also going to suggest one electric vehicle space later in the smaller cap space. But जो ओके, mid cap में है, एक Motherson Sumi is one of the companies that we think is looking very interesting. Uh, ओके, no doubt, again, stock has rallied from 90 to I think 110 right now in the last rally. I haven't seen हम्म, it on the last 1 or 2 days. अगर थोड़ा correction आया है, but Motherson Sumi is one of the other stocks in the mid cap auto space. We feel as the auto industry growth continues, Motherson will हम्म, see its growth momentum continuing. They have a lot of हम्म, acquisitions that they're done. They are repaying their debt slowly. हम्म, As the debt, उनका debt कम होते जाएगा, उनका profitability बढ़ते जाएगा. Operating, like I said, growth plus lowering expenses will lead to great amount of profit growth. और वहाँ पे हम्म, creating opportunity is definitely there. ओके, उसके बाद एक NBFC, actually not NBFC, it's a bank now. हम्म, IDFC First Bank is one of the mid cap banks that we like. हम्म, It's about 75,000 crore market cap. Uh, हम्म, Abhi, if you look, they have very strong growth engines for delivering loan growth. If you see, हम्म, they've been able to grow their loan book comfortably at 25% in the retail business, where they have reduced their infrastructure and their corporate business. So as IDFC First Bank's retail business loan book continues to grow at 20%, unke हम्म, deposits have been growing faster than anyone else for the simple reason that they are a new bank. So they have kept their interest rates higher. Because interest rates are higher, they've been able to garner good amount of deposits. Or ओके, they don't have a problem of increasing interest rate because they're already paying the slightly higher interest. So when they start cutting interest rate, deposit rate, क्योंकि उनको और deposits उतने aggressively शायद नहीं grow करने पड़ेंगे, so then you will हम्म, see a growth in margins. It's trading at about 1.5 times book. So in the banking space, I think that is a good IDFC First Bank. But क्यों मैंने NBFC बोला? Buy IDFC Limited today instead of buying हम्म, IDFC First Bank, क्योंकि वहां पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है. Merger राइट, ratio अनाउंस हो चुका है. If you हम्म, buy IDFC Limited today, so you're getting हम्म, it at 10% lower post. जब मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, आपको 10% का वैसे ही डिस्काउंट मिल रहा है. सो बाय IDFC लिमिटेड rather than buying हम्म, IDFC Bank, because you will end up with IDFC Bank but 10% lower. and in the small cap space finally we are there because small cap में जब भी कोई बात करता है स्मॉल कैप की तो ये दिमाग में लेके चलता है कि हमको मल्टी बैगर स्टॉक ही चाहिए और पिछले 2 साल में हमने देखा कि बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स प्रूव भी हुए हैं और अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं. क्या यही दिमाग में लेके चलना है या फिर थोड़ा बहुत अपने रिटर्न्स को टेम भी करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस? जी बिल्कुल. यू आई थिंक यू हैव टू टेपर योर मार्केट करेक्शन. सो जहां मल्टी बैगर रिटर्न्स काफी स्टॉकों में आए हैं, दे हैव कम विदाउट द फंडामेंटल्स रियली एक्चुअली पिकिंग अप, राइट? राइट. पीई री रेटिंग ज्यादा हुए हैं. एक्चुअली सम कंपनीज में जहां लॉस है, वो स्टॉक्स 4 times 5 times भी हो चुके हैं. आई एम नॉट सेइंग there's no justification. I'll give you simple example. Suzlon Energy went from 6 rupees to 45 rupees, right? If you look at the यस. run up in the last 1.5 years. Whereas the company is barely making any profit. But because some fundamentals change, जो debt free हो गए, they raise capital. Now they got to continue delivering on that to be able to maintain that stock price. So it is not key you're going to see another run up in all of these kind of stocks all of a sudden. एक दो साल जी. consolidation, maybe slight move up. If you have a maybe 3 year horizon, yes, आपको शायद multi bagger मिल सकते हैं. Maybe not multi bagger, but one bagger या two bagger, double या maybe राइट. maximum triple. But I would not say कि 3 महीने में या 1 साल में जैसे हुए थे पास में वैसे होने वाले. So I'll point out 4 stocks to you that we like in this space. First is these are all low risk, low debt, actually no debt companies. So ओके, first is Indian Energy Exchange. It is an ओके. exchange platform which trades in power and gas. अभी power में we are trading only about 7 to 8% of the total power that is manufactured and sold or distributed in the country. सिर्फ 7 या 8% exchanges पे होते हैं, बाकी के सब bilateral contracts होते हैं. Globally, ओके. this is as high as 35-40%.
अगर हम बोलते हैं कि इंडिया में that 7% even reaches 14%, that is a huge jump. IEX is Right. controlling 90% plus of the market. Now, no doubt Right. competition will come in, but even if वो 90% moves to 70%, अगर आपका Mhm. total volume double होता है, the growth for IEX is quite substantial. Right. का cost additional कुछ नहीं है because platform is already there. Every Mhm. additional unit of power that is traded on the exchange profitability में जाते हैं because मेरा cost structure fixed है. So जी. IEX is one of the counters we feel can do well over the next 1 year. Mhm. Target for 1 year शायद उतना नहीं रहेगा. It's not double or anything, not multi-bagger, but we could say Mhm. 180, 190 from the current levels of 135. If you have 3 Okay. year horizon, I think this is a stock that can double. Mhm. दूसरा काउंटर जो अगेन लाइक सेड कैश रिच कंपनी बाटा. अगर आप देखने Okay. चले तो ये हम लोग ने क्या देखा है इन द लास्ट 1.5 years की कंजम्पशन रूरल साइड पे या लोअर एंड ऑफ द कंजम्पशन जो मास मार्केट है दैट हैज टेकन अ हिट. और अगर आप देखेंगे तो जी. बाटा हैज फेस द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम जहां ग्रोथ हैज नॉट रियली बीन देयर इन दिस बिजनेस. Bata जी. is at the end of the day at the lower end of the pyramid when they sell their shoes across the country. Now, इनके भी business model में क्या है कि the cost is more or less fixed in nature because उनका जो store का rent रहता है वो fixed रहता है. जो दूसरे employee cost रहते हैं ज्यादातर fixed रहते हैं. थोड़ा commission का expense है जो उनको extra भरना पड़ेगा on increase से, but that is a very small percentage of the overall profitability of an increase. So we feel that once the Indian economy starts seeing at the lower end of the business model growth in volumes and business sales and all of that, तो बाटा में एक major re-rating आ सकता है. अगर Okay. SSSG सिर्फ 5 to 6% रहते हैं for the next 2 years compounded, then Bata का stock from here from these 1360 levels we feel can be about closer to 2000 levels. Plus Bata Okay. में एक और चीज हो रहा है, they are moving to premiumization. So they have new brands which are going to be higher in value. Simple example, women's wear में Nine West करके एक brand है which they have taken the rights for India and they are going to start shop in shop and then eventually set up their own Nine West stores all across. तो वो थोड़ा high product रहेगा तो margin accretive रहेगा and that will lead to profitable growth increase. Okay. So that is two. Third company है Greaves Cotton. ये Okay. electric vehicle में play है. ये actually it's जी. been a stock we have recommended for a year. एक साल में रिटर्न एक्चुअली कुछ आया नहीं है टू बी वेरी वेरी फ्रैंक. 130 का 160 जाके वापस 130 आया है, बट वी स्टिल रिमेन वेरी पॉजिटिव ऑन इट क्योंकि द शिफ्ट दैट इज हैपनिंग टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस. ग्रीव्स कॉटन उनका ब्रांड है एम्पियर, fourth largest electric two-wheeler manufacturer in India. So as two-wheeler and they also have three-wheeler which is in the auto space and they're going to be getting into this three-wheeler जो last mile delivery services के लिए भी use होएगा. So Okay. we feel Greaves Cotton is something that looks interesting. Plus उन्होंने एक और business है which is multi-brand electric two-wheeler retail business चालू किया है. So they are Okay. going to be setting up stores in various locations where they will sell across the board every brand's electric two-wheeler vehicle. It's like a landmark cars जैसा एक business model है where you buy Okay. from them and then the servicing और जो भी repair work या जो भी वो लोग करेंगे. So that will lead to also good amount of growth. So we feel ये थोड़ा long term play है 2 to 3 years, but for 1 year if you get 170, 180, I think that's a good price. But if you have a 2 to 3 year horizon, वो एक stock है जो काफी बढ़ सकता है. So these were Bata, IEX, Greaves. चौथा था एक है fourth stock हमारा banking में है. Again, Okay. banking is one of the top picks for me. South Indian Yeah. Bank है. Okay. They just finished their rights issue. 22 पे अभी राइट्स दिए थे, उसकी वजह से स्टॉक 40 से अबाउट 27, 28 तक आया हुआ है. If you look at its trading at price to book of point है about 3 साल पहले उनके नए एमडी ने एक नए गाइडलाइंस फॉलो करने शुरू किए फॉर विच दे फॉलो फॉर देयर लेंडिंग बुक एंड वो नए बुक में नॉट इवन 1% हैज बिकम एनपीए. दैट इज फ्रॉम 3 years जो लोन्स दिए हुए हैं वहां से एनपीएस इन दैट बुक इज 0.06%, which is very very good. जो उनके bulk of problems एनपीए है वो पहले के बुक के है and as those are being run down, what you are seeing is that the NPA percentage धीरे धीरे कम हो रहा है. As the NPA percentages keep coming down because of the better guidelines or rules that they're following for lending, उनका profitability increase हो रहा है.
So as the profitability increases, this year we are expecting them to do an ROE of about say 9.5%, 10%. Next year will come 13, and the year after we are expecting them to come as high as 16%. जब वो 16 ROE तक, if people start discounting that, then they will say why only 0.8 price to book, 1.5 price to book is a very fair value for a company trading, I mean generating ROEs of 15+%. So we feel then at that point it will re-rate and the stock can probably move up to 55-60 rupees, abhi 27 odd rupees hai. So in 2 years it could probably 2 to 3 years it could double. So that is our last stock in the mid cap space that we'd like to. तो बिल्कुल डरना नहीं है, यही हम सीख रहे हैं समीर से, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से बताए हैं। 6 स्टॉक्स लगभग इस स्पेस से हैं और बिल्कुल सही है। और अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स खरीदेंगे तो ही आपके पोर्टफोलियो में आपको अच्छे रिटर्न्स जो है लॉन्ग टर्म में बन सकते हैं। समीर, एक लास्ट क्वेश्चन, कौन से बड़े 3 ट्रिगर्स है या इवेंट्स है जो अगले 1 साल में मार्केट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं, चाहे वो ऊपर की हो या चाहे नीचे की, पर मार्केट्स ऊपर ही जाते हैं। सो ट्रिगर्स मैं आपको एक बोलूंगा, इंडिया में पॉलिटिक्स है, वी आर गोइंग इनटू इलेक्शन। जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है दैट कुड डिटरमिन अ बिग मूव इन द मार्केट आइदर साइड। अगर 400 के ऊपर सीट आते हैं तो द मार्केट विल प्रोबेबली गिव अ पॉजिटिव रिएक्शन एंड मूव अप, even though valuations are expensive, because people will say ki this government can now take the hard decisions that need to be taken. अगर 300 और 300 के नीचे आते हैं, again I'm saying there's no expectation कि BJP will lose, but if it comes closer to 300 or below 300, then market may look at it negatively कि being able to pass everything that you want is not going to be easy. आपको people pleasing करना ही पड़ेगा क्योंकि you always want to win the next round of election. So इलेक्शन विल बी एक बहुत बड़ा ट्रिगर। दूसरा ट्रिगर है जो इजराइल और हमास के बीच में वॉर है, अगर वो कंटिन्यू होता है, एस्केलेट होता है, दैट कुड बी अ वेरी बिग मेजर नेगेटिव ट्रिगर फॉर द मार्केट। अगर वो ऐसे ही चलता रहा बिटवीन दीज टू, दिस स्मॉल रीजन में रहे, आई डोंट थिंक इट विल matter, but we have to keep an eye on the 2 wars that are there. One is Russia Ukraine, one is Israel. The third major trigger for the market is I would like to see कि US में economic growth कैसे sustain रहता है। And why I am saying that is, हम लोग ने काफी बार डिस्कस किया है कि सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे यूएस में। इंटरेस्ट रेट कट्स कम्स व्हेन देयर इज अ स्लो डाउन हैपनिंग। अगर यूएस मार्केट इंडिकेट्स कि इट इज स्टार्टिंग टू स्लो डाउन, then what you will see is IT spends में वहां से कम होंगे, so that would affect Indian IT companies which hold a good weightage in the Indian index and Indian economy, which could hurt the overall growth of India from the export kind of and market kind of point of view. The US economy is something I would like to track. Indian economy continues to do well. Election year है, मैंने आपको कहा कि ये time पे more money will be in the hands of the consumer, so they should be able to spend more. But what is important to see is what happens in the US economy if they don't slow down drastically and what do you call it, slow landing या gradual slow down करके फिर interest rates come down and then it starts picking up, then I think India will be fine. But अगर वहां पे recession जैसा या फिर people start talking negatively, then expect a fall globally क्योंकि एक liquidity suck out होगी और दूसरे IT spendings कम हो जाएंगे, which will affect India and growth and consumption and all of that also. जी, one last question, earnings से क्या उम्मीदें हैं आपकी next 1 साल में? So earnings growth will remain more steady this time. We are not expecting any major changes. But one thing जो हम लोग ने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है कि if inflation has to be kept under control, then earnings growth cannot be overtly aggressive. क्योंकि when you say inflation is in control, meaning pricing is not in your power, it is in the pricing is more towards the purchaser rather than the supplier. And in those times operating margin increase बहुत मुश्किल हो जाता है. So whatever volume growth है वो थोड़ा सा growth आएगा, plus we will see some cost inflation from the employee side, from from the other businesses. So there will be some amount of margin compression. Actually आप देखने जाएंगे तो last 1-2 years we've seen good increase in margins. वो शायद थोड़े compress हो जाए. So growth will be more volume driven but bit more muted. और वही एक बड़ा रिस्क है क्योंकि अगर वैल्यूएशन रिच है और अगर अर्निंग्स मैच अप नहीं हो पाए, then market can correct.
जी समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस स्पेशल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, एंड विश यू वेरी हैप्पी होली सर। Thank you very much. Good luck, Itu, and happy Holi to all your viewers. थैंक यू सो मच।